Hello. Sure. So today is your first class for physics, right? And हाँ बेटा साइड उधर साइड से ना इस साइड होगा। हाँ आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल सही टाइम पे आया। मैं पहला वर्ड बोलने ही वाला था कि घंटी बज गई। So basically this is the first class of physics, right? And we will be discussing the first chapter. I think आप सब लोगों के स्कूल से स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ टर्म्स आप लोगों ने सुने होंगे जो मैं आज पढ़ाऊंगा। भले आपने सुने होंगे बट फिर भी मैं उसे पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा एंड यू हैव टू राइट एवरीथिंग, राइट? मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तीनों की अलग-अलग कॉपीज होती हैं। और फिजिक्स में भी आपके दो कॉपीज होंगी। द फर्स्ट कॉपी शुड बी यूज्ड टू राइट डाउन द नोट्स। एवरीथिंग व्हिच विल बी डन इन द क्लास वो आप फर्स्ट कॉपी में करेंगे। उसके साइड बाय साइड आपने एक होमवर्क कॉपी भी बनानी है, सेपरेट कॉपी फॉर होमवर्क, राइट? होमवर्क में क्या होगा, आपके पास जो भी बुक है एनसीईआरटी अभी एसएल में आपसे खरीदवाऊंगा एंड अदर बुक्स और जो भी असाइनमेंट मिलेगा उसको उसमें करना है, राइट? पर्पस क्या है अलग से कॉपी रखने का कि आई विल एबल टू सी कि आपने कितना किया है। सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि आपसे मेहनत करवाना। टीचर का चैलेंज ये नहीं है पढ़ाना, टीचर का चैलेंज ये है कि बच्चों से पढ़वाना। आई हैव टू मेक श्योर यू डू ऑल द वर्क, राइट? सो आई नीड टू continuously monitor you. So that is why I'm asking you to make 2 notes, right? So let us start today's physics class. So the पहला chapter, the first chapter in physics is units and dimensions. And starting we'll first define few important things. सबसे पहले हम लोग इसके अंदर कुछ important definitions लिखेंगे, कुछ important meanings लिखेंगे, right? और उनको समझेंगे. We'll try to understand what do they mean actually. The first important step in any subject is to understand the meaning of its key terms. What is unit? What is a quantity? What is a dimension? You have to understand the meaning of these terms first, right? So let me start by the first thing, physical quantities. In physics, we will deal with anything. If we deal with anything, that thing will be called as physical quantity, right? Write the definition. What is physical quantity? Any property of matter. There are many properties of matter. Matter means anything around us is called as matter. Liquid, solid, gas, etc. So what are physical quantities? Any property of matter, like its color, its brightness, its temperature, its area, its length, its weight. So any property of matter or physical
phenomena which can be measured is called as physical quantity. So anything which can be measured is called as quantity. So in physics, we'll deal with only those things which can be measured. Like your weight. Can you measure your weight? Yes. Your height? Right. But if I ask you, can you measure your intelligence? Can you measure? Half kg intelligence or 2 kg intelligence? It doesn't make sense, right? IQ is not an exactly measurable quantity. It is just comparison. It is not quantified yet. तो बेसिकली क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है. कौन सी नहीं होती? जिनको हम मेजर नहीं कर सकते. लाइक इंटेलिजेंस, यस यू कैन कंपेयर देम. ही इज मोर इंटेलिजेंट, ही इज लेस इंटेलिजेंट. इमोशंस, ही इज मोर हैप्पी, but you can't say he's 2 kg happy, you are half kg happy. Oh my god, no. Right? So we will, in physics, will deal only with the quantities which you can measure. So example are many: mass, length, time, distance, speed. So there will be some properties and there will be some phenomena. Properties like mass, area, length, density. But when I say speed, is it a property or phenomena? It's not a property, it's a phenomena. Acceleration, phenomena. Force, phenomena. Right? So phenomena or property which can be measured is called as physical quantity. Right? It makes sense. The second term which you're going to learn here is unit. Now once we have decided that in physics we'll deal with the quantities only which can be measured. Now the question arises, how do you measure? How do you measure? Can you tell me what is the length of this pen just by observing? Give me just a guess. Is it 10 centimeter? So how do you measure the length of this pen? 10 centimeter. 10. What is centimeter? Unit. Right? It is not 10 kilometer. Do you think that 10 is sufficient to measure it, or you need a unit? So to measure anything, you need some unit. What is a unit? Unit is a reference. It is 10 times of that, something called as centimeter. Right? Kilometer, it is, suppose the distance between Delhi and let's say Bombay is around 800 kilometers. So it is 800 of something called as kilometers. So we need to define, to measure anything, we need to define some standard reference. What is a standard reference? Anything which does not change with geography and time is called as standard reference. Geography and time. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1850 में 1 किलोमीटर अलग था and 19 अभी 1 किलोमीटर अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए ना. So it should not change with time and it should not change with geography. तुम इंडिया से बाहर गए, यूएस में गए, वहां पे 1 किलोमीटर छोटा है, बोले ये this is 10 kilometer my dear. Right? So it has to be same in all the countries, right? So any reference which is standard, which does not change with geography and time, which is used to measure physical quantity is called as unit, right? So let's write the definition. They're internationally accepted. Yes, of course, internationally accepted, but that is SI unit. Yes, that's it. Every country has different units. There is British system. Consider all countries except for US. No. Now we have the common units, but initially, before 200 years, every country had different units. India has its own unit, right? But now the scientists they बैठे and they've decided will decide about the units, right? It was very difficult to interact, right? So
How do you write the definition? Can you explain? अभी जो मैंने आपको समझाया, can you write the definition of unit by yourself? Tell me what is unit in a brief one sentence. Very good. Which is what it does? Which is used to measure physical quantity. How? By comparison. Now, wait, don't write. बताओ क्या है? अपने शब्दों में बना के बताओ. What is unit? यूनिट एक ऐसी चीज है जिससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं चीजों को, जो कि बदलनी नहीं चाहिए समय और स्थान के साथ, राइट? देखो, मैं तुमसे डेफिनेशन रटवा नहीं रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट, राइट? मैंने आपको चीज बताई, आपको समझ में आया, बट आर यू एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट? आर यू एबल टू राइट इट इन अ शॉर्ट सेंटेंस? दैट इज आल्सो लर्निंग, माय डियर. Unit is a very simple thing. कोई भी definition लिखवा देगा, but I want you to write by yourself, by your own words. बताइए आप क्या होगा? What is a unit? Yes, centimeter is an example, but what is a unit in a one sentence? मजा नहीं आया. It's an arbitrary reference point which can be used to measure physical quantities. Yeah, nice. At least good. So now we all agree on 2-3 things. It is a standard. One keyword is yeah. It is a standard. One keyword is it is a standard reference which does not change with time and geography, which is used to measure the physical quantities. Now write by your own words. It is a keyword. Attack on the keywords. मैं नहीं बोलूंगा. Sir, can we write arbitrary also? No. Arbitrary. They are not arbitrarily chosen. There are some. You can say in some books they write arbitrarily chosen, but there is a. So remember the keywords. It is the standard reference with time and geography. It is used physical quantity PQ by comparison. Standard reference, right? The arbitrary word come here. So there are many unit systems in the world. There were many unit systems in the world, right? Nowadays, we almost have a common system which is called as SI system. System means group. It's not an individual unit. System means we have a group of units. So in initial days means 200 years ago, only 3 quantities were important. The barter system, mass. You came here by bringing 1 gram of gold and I will give you 10 kg of pulses. Barter system. So mass was required. Distance was required because traders have to travel along from one village to another. So there should be a unit for distance. And third thing was time.
So MLT, these things together is called as system. So there were different units in different parts of world. There are many systems like CGS system. For you, two systems are most important, CGS and SI. FPS is not important, just remember the name. Because in conversion of units, most of the time you will get CGS and SI. What is CGS? CGS means centigram, gram and second. What is SI? SI is the latest system. It is called as Standard International, where we have chosen, instead of 3, we have 7. Instead of 3, we have 7 quantities, 7 fundamental quantities, right? I will come to that, what is fundamental. Now, my question is, CGS and SI, there are of course MKS, there are FPS, and there are many more, not required, only CGS and SI. So in CGS, we have M, mass, length, and time. Let me do one more thing. In CGS system, we measure mass as grams. In SI system, we measure as kg. And in MKS system, we measure at kg. Length will be meter, centimeter, and meter. Time will be second. So, if somebody asks you, what is the difference between SI and MKS? Don't you think they are identical? It's kg, that's kg. It's meter, that's meter. It's a second, that's second. What's the difference? SI is more fundamental. Dimension. Not dimension. all countries. बट एमकेएस भी अवेलेबल हो जाएगा यार भाई मीटर जगह यूज कर रहे हो तुमने नाम चेंज कर दिया तुम सामान वही बेच रहे हो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना यार कोई आपसे यही पूछ ले एमकेएस और एसआई में क्या फर्क है व्हाट्स द डिफरेंस वेरी गुड these two have only 3 units 3 not units 3 फंडामेंटल यूनिट्स लेकिन इन 3 से 200 साल के बाद काम करना बंद हो गया क्यों करंट इलेक्ट्रिसिटी को कैसे करोगे मोलारिटी पूरा केमिस्ट्री को कैसे करोगे ऑप्टिकल डेंसिटी को कैसे करोगे टेम्परेचर को कैसे करोगे तो इन 3 से हम लोग कई सारे ऐसी फिजिक्स की ब्रांच निकल के आई which could not be related using just these 3 so what is the difference between SI and MKS MK has only 3 fundamental quantities SI has 7 कौन सी 7 है वेरी गुड पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स को किसने कैप्चर किया टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं केल्विन में उसके बाद पूरी की पूरी केमिस्ट्री को किसने मेजर किया मोल मोलारिटी नॉर्मैलिटी एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को किसने मेजर किया इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर एंड पूरी की पूरी लाइट ऑप्टिक्स को किसने मेजर किया ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला ये वर्ड ना इतना फेमस है कि कैंडल इसी से आया है मोमबत्ती कैंडल यहीं से नाम आया ये सरनेम है so if somebody asks you what is difference between SI and MKS the number of fundamental quantities now let me explain what is a fundamental quantity basically we have thousands of physical quantities how many thousands and there so you have to write thousands of units for them you have to write thousands of units but we have only 3 and even in SI we have only 7
So how will you use these 7 to write rest of? We combine. Yes, we combine. How do you combine? Can you add them, subtract them, or you only multiply or divide them? Can you add them? Can you add? क्या ऐड कर सकते हो आप? जरा अगर ऐड कर सकते हो तो मुझे इस बात का जवाब देना। 2 किलो में जरा 1 सेकंड ऐड कर दो तो 3 मीटर मिल जाएगा। मजा आ गई। We can't add, right? Fundamental quantities can never be added. So how do you get other quantities? By multiplication, division. Like suppose if you want to write area, it is length into breadth, it is meter into meter, it is meter square. Volume will be meter cube. Suppose if you want to write here in Cgs unit, it will be centimeter cube. Suppose if you want to write for density, this will be mass upon volume. So how will you write? Mass will be in kg upon meter cube. Kg per meter cube. The kg meter minus. Yes, kg into meter raised to power minus 3. So you have only kg and meter, but using those two, you can derive so many. So rest all the quantities are called as derived quantities. So what is the fundamental? The fundamental are the arbitrary chosen quantities which are independent from each other, which are used to derive rest of the rest of the physical quantities. It makes sense? Now let's write fundamental quantities. Write the definition properly. The fundamental quantities are arbitrarily chosen physical quantities Right, one more thing, arbitrary chosen independent physical quantities which combine So fundamental quantities are, my dear, they are defined quantities. They are defined, and rest all of are derived. These are defined and rest all will be derived using these two, right? It makes sense. So ये आर्बिट्री मतलब यार हम इनके अलावा दूसरे भी चूज कर सकते थे, बट हमने ये 7 चूज कर लिए. जैसे तुम्हारी क्लास का मॉनिटर आर्बिट्री चोजन होता है, टीचर का जो मन है वो ले लिया, बट किसी बच्चे यस नॉट रैंडम बट दे हैड मोर चॉइसेस बट दे चोजन. मतलब इनमें कोई ऐसी खास बात नहीं है. करंट की जगह हम लोग चार्ज भी चूज कर सकते थे. वी कुड हैव चोजन चार्ज एज वेल बट वी चोज करंट. मेरी मर्जी, कोई तो चूज करना था. सो आर्बिट्री मींस वी हैड more choices to choose from, but we arbitrarily chose कि okay, out of these 100 these 7 would be good. So that is called as, it's on the discretion of the scientist. Arbitrary. There is no logic, there is no law behind the choice of these fundamental quantities. Only one condition is that they should be independent. Otherwise what is the matter of choosing them? अगर वो आपस में डिपेंड हो जाएंगे तो आपस में डिराइव हो जाएंगे. अपने को तो बिल्कुल चारों कैसे चाहिए अलग अलग. एसी चल रहा है बढ़िया. So point
here is fundamental quantities. We'll write few properties of fundamental quantities. First thing, they are arbitrarily chosen. It means we could have chosen other set also. Second, they are independent from each other. They are independent from not others. They are independent from each other. Right. Note, fundamental quantities are arbitrarily chosen, means we could have taken some other sets also. Take other sets means other group. Second point, one important condition to be a fundamental quantity is that they must be independent from what? Each other. Independent from each other. Now, let me ask you a question. Which of the following set can be chosen as fundamental quantities in some hypothetical system? Option A, length, area. Option B, area, volume, or area, mass. And then speed, length, volume, time, frequency. तो आपको बताना इन चार ऑप्शन में से, these are four options, you have to choose one option. This is MCQ type question. We call these as multiple choice questions. So out of these, one answer will be correct. So what is the question? Question is that suppose in some hypothetical system, we have again a choice to choose some fundamental quantities again. So which of the two can be chosen as fundamental? Can we choose length and area? Why not? Yes, because you can relate length and area directly. How? Area will be L square and it contradicts the second condition. They should be independent. What does this mean? You should not be able to write area from length, but you can write. So this is not possible. What about the second one? Area and mass. This is hypothetical system, my dear. We have some other. Can you choose in some hypothetical system? Suppose if I send you 200 years back, you are the main head of that society, Royal Society of England. So if you have a choice, can you choose? Can you choose? You will say, yes, I am the boss, I can. No, no, my dear, you have to follow the condition. Tell me, can you choose the area?
Yes, you can't write area in terms of mass. Can you write ever? How will you write area and mass? Mass and area. Length can be written in terms of area, but you can't write mass and area. Right? It's kg. कुछ भी कर लो मास के साथ वो एरिया. तो ये पॉसिबल हो सकता है. इंडिपेंडेंट. लेंथ एंड वॉल्यूम. वेरी गुड. नहीं हो सकता क्योंकि जैसे एरिया नहीं हुआ वैसे. What about time and frequency? Do you know the formula of frequency? What is frequency? So hertz. Hertz. But what is the formula? 1 upon time. Yes. So we can't use. I think you understood the meaning of independentness, right? You should not be able to write other physical quantity in terms of the given physical quantity, right? It makes sense. चलिए, तो फंडामेंटल में बस इतनी ही बात है. आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट जो टर्म है डायमेंशंस. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. सो सपोज अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जाम्पल, this is a quantity and this is unit. What is the unit of distance? It will be meter, right? Length. So instead of writing meter, okay, let me write meter. What is the unit of? Yes, symbols. Yes, that is what I am trying to say. Symbols. So there are symbols for the 7 fundamental quantities. How many fundamental quantities are there? 7, and there are symbols for them. Let me write the symbols as well. What is the symbol for mass? Not kg, it's a unit. There is a difference between symbol and unit. Now we are unit is specifically for SI system. This will be specifically for. So we needed a term which is independent of system. We needed a term which just represent the quantity, not the unit. So what we have done, we have chosen the symbols. So how do we write mass? Capital M. How do we write length? Capital L. How do we write T? How do I write temperature? Not T. Because T is already booked, my dear. No. K. We'll use K. Kelvin. K for Kelvin. Similarly for MOL, mole. For current? I or A. Generally we use A in physics. I is also correct, but we use A. We'll use A. For candela, we'll use CD. So now, suppose if I want to represent a quantity, I will use symbols, not units. Because a single quantity can have many units. Centimeter, millimeter, kilometer, parsec, light year. It's very confusing, my dear. So we'll talk in now. To represent a quantity is better to represent it using a symbol so that the system of unit doesn't change it, right? So that is why we need to define the symbols. Now, okay, so we'll talk in symbols. So how do you write this thing? L. How will you write the area? Meter, area. The unit will be meter square, but how will you write in symbols? Very good. L square. What about volume? Very good. The unit will be meter. SI unit, we are talking about SI unit. And in symbols, it will be LQ. Suppose if I ask you speed.
So can you recall the formula of speed? It is distance upon time. Very good. So this will be meter upon second, which can also be written as meter per second in units. It can also be centimeter per second. It can also be kilometer per hour. So unit can be, there are many possibilities for the same quantity. We have many units, but we have only one symbol. We have only, which is called as L. I think it makes sense. There is a difference between a symbol and a unit. Symbols tells you what it is. The unit tells you the reference. So what this symbol is called as? Yes. Symbol is the identity of a quantity. Don't write, I will write everything. Just try to understand. Symbol is the identity of a quantity. It is speed. So can you have two identities? Do you have two Aadhaar cards? No. But you can have two names, right? At home and at school and at your college. So any physical quantities will have only one. Now say that symbol as dimension. Any physical quantities can have only one Aadhaar card, which is called as dimensions. But it can have many units. It makes sense, right? Two physical quantities can have same dimensions? Yes, sir. Yes or no? The meter and centimeters are two physical quantities. Dimensions. Can one physical quantity have two dimensions? Can two units are possible for the same quantity? Yes, sir. Yes. Simple. So what is dimension? It is the identity of a physical quantities because it represents how it is made from the fundamental. So how speed is made from? It is made from L and T, length and time. Suppose if I ask you about acceleration. So what is acceleration? That is speed upon time, right? Speed upon time. So tell me what will be the unit? Speed upon time means, what is speed? Meter per second is speed upon time. What is time? Second. So how will it change? It will come meter minus 2 because there are two s in the denominator. One is this and one is this. So this is meters per second square. But it can also be centimeter per second square. It can also be kilometer per hour square. Unit can be so confusing. But its identity, its Aadhaar card will be L T minus 2. You'll understand, oh, this is a acceleration. Right? Now, can you recall the force? What is force? Force is mass times acceleration. So can you write the unit of this thing? What is the unit of force? It is mass times acceleration, means mass into acceleration. So kg meter. So you have to multiply acceleration into mass. Why mole, my dear? Mole is not measured. Mass. It's a kg meter. Yes. So this is mass means what? Kg into the acceleration. So this will become kg mass into acceleration. Mass into it makes sense, right? So what is the MLT minus 2. very good. It makes sense to everyone. Let's write about energy. So can you recall the formula of energy? Any energy? Work, but you don't know the unit of work, right? Energy का कोई formula याद है? So done by time. But work done का नहीं पता ना? वो तो power थी. So that's power.
एनर्जी का कोई फॉर्मूला 10th में पढ़ा? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², नहीं पढ़ा? mgh gravitational potential energy. Okay, no worries. So let me give you the formula for kinetic energy, the energy due to motion. What energy? Kinetic means motion. So energy attained by a body due to its motion is called as kinetic energy, and it is defined as half into m into v square. What is m? Mass. What is v? Speed. Half किसी का नहीं है, हाफ केजी भी होता है, हाफ मीटर भी होता है, हाफ सेकंड भी होता है। नंबर्स की कोई आइडेंटिटी? तुम शर्ट खरीद के लाए, ये क्या है? आदमी औरत है? शर्ट, शर्ट तो जिसने पहन ली वो है, शर्ट की कोई आइडेंटिटी? इसको उखाड़ के फेंक दूंगा मैं, तो दूसरी पहन लूंगा। तो ये हाफ, तो हाफ की जगह 5 लगा दो, 6 लगा दो। नंबर्स हैव नो आइडेंटिटीज, किसी के सगे नहीं है, राइट? नाउ टेल मी, इट मींस अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी की यूनिट लिखनी है तो मुझे सिर्फ किसको देखना चाहिए? मास को। मास का मतलब क्या हुआ? एक टर्म क्या आ गया? केजी। दूसरा क्या देखना है यहाँ पे? क्या मैं सीधा स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं या स्पीड का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं? स्क्वायर से करेंगे। तो स्पीड क्या थी? मीटर पर सेकंड। स्क्वायर करने का मतलब यही हुआ ना यार, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर। दिस इज द यूनिट ऑफ, so this is how we derive the unit, just by multiplying. We never add, just by multiplying. So we have to remember few, especially all these. The energy and force are the most important units because हर चैप्टर में वो, हर चैप्टर में फोर्स ही पढ़ना है तुम्हें, हर चैप्टर में एनर्जी ही पढ़ना है, तो हर फॉर्मूले में फोर्स एनर्जी से रिलेट हो जाएगा। सो बताओ जरा इसका डीएनए बताओ। व्हाट इज द डीएनए ऑफ एनर्जी? बताना जरा, क्या एनर्जी का डीएनए? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? केजी का मतलब एम, उसके बाद एल स्क्वायर एंड टी रेस्ट पर -2। सो ये जो चीजें आपने लिखी है सिंबल्स के टर्म्स में, इनको क्या बोलते हैं? डायमेंशन। सो लेट मी राइट द डेफिनेशन प्रॉपर्ली। और डायमेंशन बेसिकली इनको डायमेंशन नहीं, इनको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इनको? डायमेंशंस तो पावर्स होती हैं। देखो जरा इन सब में क्या लगे? पावर से तो लगे, सब में मल्टी आ रहा है। एवरी यूनिट विल हैव आइदर एम और एल or the remaining 7, but what will be different? What makes them unique? The powers of m, the powers of l will make them unique. Suppose if you double the power, it will become area. If you triple it will become volume. So dimension, the complete L cube is dimensional formula, but the cube is dimension. So the powers have the name. The powers of fundamental quantities is called as dimension, and the representation in its symbols is called as dimensional formula. A very fine difference, right? Either both of them make the same sense. ये समझ में आपको MLT clear to everyone? लिखिए नोट। अब इसके आगे हम लिखेंगे हाँ डेफिनेशन। सबसे पहले लिखिए डायमेंशनल formula. The representation of derived quantities क्या लिखा आपने? derived quantities in terms of symbols of fundamental quantities, in terms of symbols of
fundamental quantities is called as dimensional formula, is called as dimensional formula of that derived quantity. सिंपल है यार, ये कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब लिखिए डायमेंशंस। What are dimensions? What is dimension? The powers of what? No. The powers of, be precise. Is it the formula of the dimensional formula or L, T, M? It is not complete power. It is the power of each fundamental symbol, right? So how do we write dimensions? The powers of, wait. The powers of fundamental quantities which combine to give a derived quantity. That's all. The powers, so exactly tell them, these are the powers of the fundamental quantities. That's all, which combine to give a derived quantity. So, right? Dimensions are the powers of, these are the powers, right? Powers of fundamental quantities which combine meaningfully to give a derived quantity. So I think ये clear है आपको? What are physical quantities? What is a unit? What is a dimension? What are fundamental quantities, right? So this was the basic understanding of the terms. ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी चैप्टर में। इनके बीच में आपको प्रिसीजन पता होना चाहिए कि ये है, ये है, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन दिमाग में होना चाहिए। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। अब हम लोग इस चीज को यूज करेंगे इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। These definitions will be used so beautifully in solving problems. These are very fundamental things. और आप सरप्राइज हो जाओगे कि इस छोटी सी चीज पे ऐसी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स आएंगी, ये जो क्वेश्चंस बनेंगे, वो 3 सेट्स में बनेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स और 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ वेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। पहला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दूसरा डेरिवेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला और तीसरा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। So there are 3 applications or the problems or anything you can say, 3 things for this chapter. और इन 3 चीजों को हम लोग लिखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। टुगेदर these 3 things are called as डायमेंशनल एनालिसिस एंड दैट्स ऑल। और चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। आपके चैप्टर में मेजरमेंट भी होते थे बट वो अब इस साल हट गए हैं, लेकिन आईआईटी और नीट में होगा वो। तो वो चीज जो आईआईटी और नीट में एक्स्ट्रा है वो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे, रेगुलर क्लास में नहीं। अभी तो तुमको पहले मुझे स्कूल में टॉप करवाना है, तो अभी मेरा पहला पर्पस ये है कि आप अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक लाओ अपनी क्लास में, एंड उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, देन विल इंक्रीज 1 more क्लास एवरी वीक, 2 to 3। तब तक विल फोकस ऑन फर्स्ट ऑन स्कूल्स, राइट? सो हेडिंग डालिए डायमेंशनल एनालिसिस। Principle of homogeneity, second
derivation of empirical formula. Third, conversion of unit. So we'll learn one by one each of them. First, we'll focus on what does this mean, principle of homogeneity. Have you written everything? So now, so before I write this principle, let me ask you one question. Is it true? Is it true? Yes. Are you sure? Yes. I can make it wrong. It is mathematically true, but not necessarily. Yes. Now tell me, is it true? So in physics, when you see 2-3 terms, suppose if you write the equation V equals to U plus AT. Suppose if you write S is equal to UT plus half AT square. Suppose you write Q equal to IT. Suppose you write W equal to PT. Anything if you write, these are just, do you think these are just mathematical terms or they should have same dimensions? This equation be true only if each of them, this equation is true only if this is also meter, this is also meter, and then this is also, then it's true. So when you in physics you will have many formulas. Don't you think they are just numbers or they also have some soul? क्या वो सिर्फ नंबर है क्या 1 2 3 या वो कुछ क्वांटिटीज भी हैं? So you have to make sure you add with the same quantity. You can't add kilometer with seconds. So if some formula is correct, अगर कोई physics का formula correct है, तो don't you think it will make sure that kg should be added with kg, meter should be added with meter, second should be added with second. It means if these two things are added, then this is meter per second, and this thing must also be, AT should also be meter per second, and when they add, they should become. We are not asking about values, we are asking about identities, the type of quantity. So this is called as principle of homogeneity. If two things are equated, added or subtracted, then they must have same dimensions, right? If any two physical quantities or expressions expression का मतलब 80 स्क्वायर, मतलब अगर आप ऐड 2-3 क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन को कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सप्रेशन. सो इफ यू आर एडिंग, क्या लिखा आपने? और expressions, if two physical quantities or expressions are added, comma subtracted और मल्टीप्लाई में जरूरी नहीं है यार, केजी और मीटर किया था ना, मल्टीप्लाई नहीं, ओनली एडिशन है. एंड एक और चीज बच गई. Is it true? Equated. Or equated, then they must have same dimensions. Then they must have same dimensions, right? अच्छा ये बताओ, व्हाट अबाउट नंबर्स, क्या उनकी भी डायमेंशन होती है क्या? तो एक नोट लगा के ये भी लिख लेते हैं कि ऑल दी नंबर्स, फ्रैक्शंस, फंक्शंस
लिखिए नोट लगा के, उसी के नीचे लिख लो ऑल दी नंबर्स, fractions, functions and their arguments are dimensionless. It means, suppose if somebody asks you what is the dimension of स्पीड, तो कैसे लिखते हो आप इस चीज को? स्पीड और इसके बगल में एक ऐसा ब्रैकेट लगा दे, तो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने के बजाय ये, अब समझ में आया? क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद द वैल्यू ऑफ स्पीड कि 2 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन इट्स डायमेंशन. सो डोंट थिंक कि जब भी ब्रैकेट लगाओ तो मतलब आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या था स्पीड का, जरा याद करो, LT मीटर पर सेकंड, राइट? LT-1. Now suppose if I ask you what is the dimension of half, what is the dimension of 100, what is the dimension of you, if you have ever heard of sin x, sin omega t, सुना साइन फंक्शन, साइन कॉस पढ़ा है ना, ये फंक्शंस होते हैं ना, तो ये सब के सब क्या है? तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करूं? किसको जीरो करूं? क्या इसको जीरो कर दूं क्या? इन सबको जीरो करना है? नहीं सर, पावर जीरो करनी है. वेरी गुड, क्योंकि डायमेंशन लेस का मतलब पावर्स आर जीरो माय डियर. तो कभी कभी इनको सिर्फ 1 लिख देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? m0. Yeah, no. Please stand. This is a bracket of 100 is equal to 1, not 100. Value of 100 is nothing. 100 has no dimension. तो जहां भी फंक्शन आएगा उसको वो हटा दो, उसकी जगह 1 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट? अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा. इज इट क्लियर? मेक सेंस? आइए क्वेश्चंस करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. The force between two masses m1 and m2 is given by force F is equal to G m1 m2 by r square, where r is the separation between the charges. Find dimension of this. समझ आ गया क्वेश्चन? जी की वैल्यू पूछ रहा हूं या जी की डायमेंशन पूछ रहा हूं? डायमेंशन. जी क्या है? क्या बोलते हैं जी को? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझो, मैं कराता हूं, उसके बाद आपने सीखना है. क्या ये फॉर्मूला ट्रू है? हाँ, क्योंकि इसने दे रखा है तो ट्रू है. तो अगर ये ट्रू है तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फोर्स की जो डायमेंशन होनी चाहिए, आपको लगता नहीं वो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, है ना? दे आर इक्वल. अच्छा, इससे भी बेटर, इससे भी आसान तरीका क्या है? किसकी डायमेंशन निकालनी है हमें? जी की. तो जी को लेफ्ट में ले आओ, तो जी इक्वल टू लिख सकता हूं मैं एफ आर स्क्वायर अपॉन. इज इट ओके भाई? ये रीओरिएंट लिख ही सकते हैं ना. Now can you see the two things are equated? G is equal to this thing.
So if you want to write the dimension of G, then it should be equal to the dimension of this upon dimension of this, according to principle of homogeneity. Now बताओ न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? What is the dimension of F? अभी लिखा था मास इनटू एक्सेलरेशन, तो याद रखना है. So this was m l t minus 2 and multiplied by L square. very good, r is l square, and in denominator we have M square. m square, mg into mg. So there are two m's, means m square. So can you cancel one of them? Why not? Yes. So now tell me, what will be the dimension of G? M minus 1 and M will go in numerator as minus power, and then L3. L3, and then P minus 3. so this is the dimension of G. Right? Makes sense. Easy, easy peasy. समझ में आ रहा कैसे किया मैंने? What is the first step? What is the first step? समझ में आया? रीराइट करना. And what is second step? वो अंदर जितनी भी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है उनकी यूनिट डाल देना. इज इट क्लियर? लिख लो जल्दी से. मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा? ये इजी होता है बहुत, लेकिन शुरू में कंफ्यूजिंग रहता है. बट आई थिंक नाउ इट मेक्स सेंस टू एवरीवन. इट शुड मेक सेंस टू यू. एक और क्वेश्चन दो सिमिलर सा. फोटोन नाम तुमने सुना? फोटोन. व्हाट इज फोटोन? The photon is light. पार्टिकल ऑफ लाइट, राइट? आइए उसी पे क्वेश्चन दूंगा. The energy of photon is given by E equal to hc by lambda, where lambda is the wavelength of light, c is the speed of light, and h is called as Planck's constant. ये प्लैंक साइंटिस्ट का नाम था. हमसे पूछा फाइंड इसका मतलब समझ जाओगे आप. वैल्यू बतानी है या डायमेंशन बतानी है? डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. करो. The energy के dimension क्या है? एनर्जी और फोर्स के याद रखने हैं. रिकॉल करो क्या थे. पीछे पेज पलट के देख लो ना, लिखवाया था ना एनर्जी. फोर्स और एनर्जी में बहुत बारीक सा फर्क है. The energy का dimension एल स्क्वायर माय डियर, एम एल स्क्वायर, और फोर्स में एम एल था. अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो साइड में लिख लो. फोर्स और एनर्जी रटना है, रट के जाना है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होंगे. एवरी फॉर्मूला विल हैव आइदर फोर्स और एनर्जी. प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालना है. वही तो है, फाइंड डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. वेवलेंथ की क्या होगी जी? is. So lambda will be. Lambda will be a constant. Yes, so we can ignore that. How do you know it's a constant? It's not a half. It's a physical quantity, my dear. It's not a mathematical term. It's not like half. It's not like 100. It's a quantity. Lambda can be different for different wavelengths. Now tell me, what is lambda? It's a wave की length, and length means L. Length L. So क्या करें? सबसे पहले क्या करना चाहिए? What is your first step? Take H one side. Take H one side. H को एक कोने में ले जाओ.
तो बताओ क्या हो जाएगा, H विल बी इक्वल टू E lambda by C. E लैम्डा बाय C। अब क्या कर दें, दोनों तरफ लगा दो डायमेंशन, यही करना है ना यार। बताइए जरा आप, न्यूमरेटर में क्या होगा बताइए। C तो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या लिखूं अब इसके आगे, एक मिनट। वैल्यूज, वैल्यूज डायमेंशंस, किसकी डायमेंशन, ई की और लैम्डा की, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डायमेंशन को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ ई की डायमेंशन क्या है, एनर्जी की, एनर्जी अभी रटवाई ना मैंने, एल स्क्वायर तो एरिया था, गजनी नहीं बनना है अपने को, याद रखना एनर्जी का। वेट वेट, एनर्जी का फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन रट लो। फोर्स की क्या थी, एम एल टी माइनस टू, और एनर्जी क्या है, एम एल टू, याद रहेगी। इसको राइट साइड में लिख लो बेटा, सारे क्वेश्चन इसी में कराऊंगा मैं, ये अगर बार बार भूलोगे तो दिक्कत। बताइए तो क्या लिखूं सबसे पहले, एम एल टू टी माइनस टू। अब इसको सारी एनर्जी आर सेम माय डियर, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्लांक्स एनर्जी, व्हाटएवर एनर्जी डजंट मैटर, ऑल द एनर्जीज आर एक ही इंसान है, डॉक्टर इंजीनियर इंसान ही है। समझ में आई बात। अब बताओ लैम्डा का क्या करें, लैम्डा को ऐड करूं या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा वो, एल लेंथ, सबकी लेंथ बराबर है जी, वेव की लेंथ यार, ये होती है, ये होती है ना वेव, तो ये दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है ये लेंथ ही तो है माय डियर। सो डायमेंशनली वैल्यू नहीं लिखनी है, एल विल मेजर दैट इन मीटर ओनली। What about denominator? What is speed of light? Do you need the value or you need the LT minus 1? Yes, speed of anything is LT minus 1. So we are not interested in values. हमें तो पता चाहिए उसकी यूनिट चाहिए, L से L कट गया, कितना आ गया जी, मल्टीप्लाई कर दो, M L2, बताओ T के ऊपर पावर क्या आएगी, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। जनरली बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, बट आपको समझ में आता है, ये दो T नीचे है, ये एक T ऊपर है, तो वेरी गुड। So this is the dimension of Planck's constant. आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा क्लियरिटी आई क्या हो रहा है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फोर्स on the current carrying wire of length L under uniform magnetic field B is given by F is equal to IBL. F is force, I is current, where I is current in the wire. Find dimension of B. ये B को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, मैग्नेट देखा है ना आपने, तो मैग्नेट जो फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन बतानी है, बताओ।
किसी का आंसर? क्या करना सबसे पहले? बी को मूव कर देते हैं, तो बी इक्वल टू आई एल। अब दोनों की डायमेंशन लिख दो। बताओ, तुम बताओ चलो। व्हाट विल बी न्यूमरेटर? m l t minus 2, well done. And then what will be denominator? In denominator, what is I? No, my dear. Ampere. A. Electric current. Right? So read carefully. And L will be L. That's all. ये L से L गया. So M L0 T minus 2. No, not necessary. वो by mistake मैंने लिख दिया तो मैंने डाल दिया. You can leave it. Easy peasy. तो मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, वो फॉर्मूले आपने याद भी रखने हैं, आपके बाद में काम आएंगे, और आपने उनकी यूनिट भी सॉल्व करनी है, राइट? तो एग्जांपल नंबर मेरे ख्याल से 3rd है ना, ये कि 4th है? 4th। तो आप इन सबकी डायमेंशन लिखेंगे, फॉर्मूले में बगल में लिख दूंगा। प्रेशर इज, बट वो ऐसे यार टेबल जिंदगी में याद नहीं होगी, बुढ़ापा आ जाएगा, याद नहीं होगी, करना जरूरी है। स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। यंग्स मॉडुलस, फोर्स अपॉन एरिया इनटू L by delta L। लिखो जरा इन तीनों की। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों क्वांटिटीज अलग हैं, लेकिन दोनों के फॉर्मूले, दोनों की डायमेंशन, हाँ तभी तो लिखवा रहा हूं। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, एक कांस्टेंट है, एक प्रेशर है, एक स्ट्रेस है, लेकिन तीनों की डायमेंशन, तो एक ही डायमेंशन के मल्टीपल क्वांटिटीज हो सकते हैं, याद रखना। इन तीनों की डायमेंशन बता दो क्या होगी, ये याद भी रखना। ये एक्सेप्शन ऐसे ही मैं रटवाऊंगा धीरे धीरे, एक्सेप्शन नहीं है, मतलब कुछ यूनिक चीजें बार बार आएंगी। यंग्स मॉडुलस आएगा, आप देखना बार बार। पहले यूनिट बता दो इनकी क्या होगी। इसकी यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया कर दिया ना, करके दिखाऊं पूरा। फोर्स कैसे लिखोगे? अब यूनिट लिख रहे हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। कुछ कट रहा है? 1 मीटर मीटर कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? केजी m-1 s-2। अब तुमको एक मजेदार चीज और बताता हूं, साइंटिस्ट लोगों को ऑनर करने के लिए फोर्स की जो यूनिट है उसको क्या बोल दिया जाता है? न्यूटन। तो ये सेम यूनिट इसकी ये भी हो सकती है, न्यूटन पर। और अगर आपको याद होगा तो इस चीज को भी एक नाम दे दिया गया, उसे बोला जाता है पास्कल। पास्कल भी साइंटिस्ट का नाम है। तो पास्कल, न्यूटन, जूल, अर्ग्स, डाइन, ये सारी जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट के नाम है। ये यूनिट्स है, यूनिट के नाम है। These are the names of unit. ये units are only kg, mlt, but we have given names to honor the scientist.
तो आपने उनके अंदर की कहानी याद रखनी पड़ेगी, खासकर एनर्जी के लिए जूल और फोर्स के लिए न्यूटन। तो बताओ जरा डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, तीनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी? सीधा यूनिट से दिख रहा होगा, दैट इज m L-1 P-2 याद रखिए। यंग्स मॉडुलस जो है ना, इसमें भी ये तो दिख गया आपको, एंड दिस इज लेंथ अपॉन लेंथ, दिस विल बिकम डायमेंशनलेस। इफ यू डिवाइड मीटर बाय मीटर, नथिंग विल, so L is length and delta is change in length, but change in length will be in meter only na. So is it clear, Young's modulus? Example number 5. Work force into distance, energy half mv square, torque force into perpendicular distance, इन तीनों की डायमेंशन क्या होगी जरा देखना, निकालना इन तीनों की डायमेंशंस निकालिए सीधा। Yes, sure. So this will be, the force will be ml into, अब तो याद हो गया होगा फोर्स का, into distance will be, तो क्या निकल के आएगी m into, और यहाँ पे एनर्जी में ये तो याद ही है ml2, और ये भी क्या आएगा ml2। तो एक और तीसरा दूसरा सेट इंपॉर्टेंट, वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क, इनकी भी डायमेंशन सेम होती है। डोंट वरी, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, जस्ट राइट देम। your mind will take some time to absorb all these facts, but at least you have to read it for the first time, right? पहली बार तो कहीं ना कहीं पढ़ोगे ना, अब धीरे धीरे फिर स्कूल में, फिर एग्जाम में, फिर टेस्ट में, फिर असाइनमेंट में, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। डोंट वरी, राइट? नो, कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना, फॉर्मूलाज मैं लर्न करवा दूंगा प्रैक्टिस के थ्रू। You have to remember only a few things, not all things, and I will tell you what things you have to remember: force and energy, that's all. Example number 6, एग्जाम्पल ही मैं इतने करा दूंगा ना कि तुमको भूलेगा नहीं। The ideal gas equation is given by PV equal to nRT, where P is the pressure, V is the volume, N is the mole, T is the temperature, R is the universal gas constant. Find N is mole, dimension of R,
क्या करें सबसे पहले? करो करो करो, आराम से करो, कोई दिक्कत, कोई जल्दी नहीं है। यू कैन, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप पीछे देख सकते हो, जैसे इसमें प्रेशर की डायमेंशन, तो यू कैन, इसीलिए मैंने लिखवा दिए वो फॉर्मूले, दे विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। Sir, think of the answer that I'm saying. Okay, let me see. Sir, ml2 T minus 2 by K. What about mole? Sir, isn't mole a constant? Oh my dear, it's a fundamental. This one. Mole. All the chemistry is mole, my dear. One of the fundamental. Mole. Mole is just mole. Yes. Molarity अलग चीज है. Molarity is number of moles per unit volume. That's a different thing. So, sir, just add mole to the denominator. Yes, you have to write just mole. So what is your R? R equal to PV upon N into T. So now let's write the dimensions. What about P? What is P? Write the dimension M. Minus 1 T minus 1. Very good. Into what about V? And the power L2. Volume is L cube. What about N? MOL. MOL. Just write MOL. What about T? K, not T. It's a temperature. So the dimension will be M L square T minus 2 mole inverse Kelvin inverse. So, can't you just leave mole and obtain the denominator? Yes, you can leave that, but this is a standard way to write everything, because we want to show the dimensions -2, +2, 3. No, not at all, but use convention. If you write Utpatang order, then we'll try to use the convention, which is easy for the examiner to read out, right? क्लियर हुआ इसमें? तो वो 7 फंडामेंटल भूलने नहीं है। अभी तक एमएलटी आ रहा था तो एमएलटी में ही आदमी घूम जाता है कि इसके अलावा बाकी एग्जिस्ट ही नहीं करते। अरे करते हैं, तुमको फॉर्मूला नहीं करा है इसलिए नहीं दिख रहा है, वो सारे आते हैं। हैव टू बी टेक केयर ऑफ देम, राइट? अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कराता हूं। एग्जांपल नंबर 7, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल in simple harmonic motion is given by y is equal to a sine omega t, where a is amplitude, t is time, and omega is angular frequency. हमसे पूछा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी एंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा। You know the sine function, right? I don't know, and you also don't need to know. You have to apply the dimensional analysis, my dear. Think in terms of dimensional analysis.
Yes. Sign is dimensionless, but does that mean A is also dimensionless? No. Then A can have dimension. Yeah. So what should be the dimension of A? It should be equal to what? We are not equating sine function with A. We are multiplying them. The dimension will be equal only when you equate them. By multiplication, the dimension won't be equal, right? So you are halfway there. The sine function 1 is the dimension of, yes, that's true, but I am asking what is the dimension of A. Why 1? Because it is multiplying with 1. मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी इक्वेट होता था माय डियर, ऐड करने में सेम होता था, इक्वेट करने में सेम होता था, मल्टीप्लाई करने में बराबर नहीं होता था, बताया था ना मैंने. So A is length. A is length. How? Displacement is what? Length. Yes. Yeah. Displacement is length. So left hand side is length. Right hand side also. Very good. Outstanding, my dear. तो अप्लाई करो ना यार डायमेंशनलेस, ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो दिस शुड बी दिस इनटू दिस और नॉट. तो ये क्या हो जाएगा? दिस शुड बी डायमेंशन ऑफ ए इनटू डायमेंशन ऑफ sin omega t should be equal to dimension of y. Now tell me, dimension of a into sin omega t will be just 1, will be equal to, so dimension of a should be equal to, well done, got it. तो sin omega t का ऐसा जैसे यहां मल्टीप्लाई होने से डायमेंशन में कोई चेंज, y इक्वल टू ए माय डियर, वैल्यू नहीं, क्या इक्वेट हो रही है? यूनिट डायमेंशन. समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड एक्चुअली में लेंथ होता है. एम्पलीट्यूड इज द डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. क्लियर हुआ? ये आई मजी? अब ये भी बता दो ओमेगा टी क्या होगा डायमेंशन अंदर साइन फंक्शन के अंदर है? एल स्क्वायर. हाउ? फंक्शन, इसको पता है क्या बोलते हैं? फंक्शन के अंदर जो लिखा होता है इसको बोलते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट. तो फंक्शन और फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है वो दोनों डायमेंशन लेस. फंक्शन भी डायमेंशन लेस है और फंक्शन के अंदर जो नंबर गया है वो भी. सो ओमेगा टी, ओमेगा और टी है ना फंक्शन के अंदर, सो इट शुड बी I think equal to 1. I guess you got the point. Yes. No dimension of omega t. समझ में आया? मेरा कहने का मतलब यह है कि sin omega t भी 1 है तुम्हारे लिए और omega t भी वैल्यू वाइज नहीं, डायमेंशन वाइज. क्लियर हुआ? यही तो था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अच्छा बताओ, तो ओमेगा की क्या हो जाएगी? अगर ओमेगा टी 1 है तो ओमेगा क्या होना चाहिए? टी को उधर ले जाना 1 by t. तो t minus 1 my dear, because omega t is 1, so t has to be, omega has to be 1 by t. Is it clear to you? This is one of the finest question. तो कुछ rules है. It's very simple, right? But it's confusing. But I think it's clear now. क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना काफी है. विल कैरी इट, इसको हम लोग अगली क्लास में कैरी ऑन करेंगे. आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, जरा एक बार फिर से समरी कर लेते हैं. सबसे पहली चीज क्या पढ़ी आज हमने? व्हाट आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज. फिर उसके बाद यूनिट्स, यूनिट्स के बाद फंडामेंटल 7 पढ़ी हमने, है ना. उसके बाद फिर डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला. एंड डायमेंशनल एनालिसिस में कितने थे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डिडक्शन एंड कन्वर्जन. तो आज हमने कौन सा टॉपिक किया? प्रिंसिपल ऑफ. अगली पूरी क्लास में यही करेंगे.
ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी में तुम्हारे सामने चैलेंज क्या है, यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट 18 डायमेंशंस जो मैं तुमको याद करवाऊंगा। इसमें कई सारी याद हो चुकी हैं, जैसे तुमको फोर्स याद हो चुका है, स्पीड याद हो चुका है, प्रेशर याद हो चुका है, एनर्जी याद हो चुका है। तो आई गेस मैंने तुमको 5-6 तो याद करवा दी, बट वी हैव टू टेक इट टू अप टू 18। तुमको पता ना इंग्लिश वोकैबुलरी में भी यही एक सिस्टम है ना कि एक एवरेज जो अच्छा अंग्रेजी का गुड स्पीकर है, जिसकी अंग्रेजी लोग बहुत अच्छी बोलते हैं, उसको भी बहुत ज्यादा वोकैबुलरी याद, देयर आर अराउंड सम 500 वर्ड्स, कुछ ऐसे ही है ना। अ गुड जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, जो लगता है कि भैया ये पैदा ही कैलिफोर्निया में हुआ है, वो कितने वर्ड याद है उसे? 500। ऐसे ही फिजिक्स में अगर तुमने 18 वो जो तुमको बताऊंगा वो याद अगर कर लिए, तो तुम्हारे वहां बोलेंगे भैया ये तो बॉन्ड जीनियस है। तुम्हारे स्कूल में दोस्त बोलेंगे ये बॉन्ड जीनियस है, राइट। सो वी हैव टू रिमेंबर 18, ओनली 18। कितने? 18 मैंने 4 याद करवा दिए, बाकी मैं धीरे धीरे करवा दूंगा, डोंट वरी, राइट। आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास आपकी होगी थर्सडे को, है ना, फिजिक्स की क्लास होगी और केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब 2 क्लासेस होंगी। अच्छा, तुम्हारी तो सिर्फ फिजिक्स की होगी ना, ठीक है। तो पहली क्लास मैं टाइम बता दूंगा, या तो पहली होगी या दूसरी होगी, या तो 4 to 5:30 होगी। और अभी क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, तो इट्स नॉट फिक्स्ड, बट आफ्टर सम टाइम इट विल बी कंप्लीटली फिक्स्ड। मतलब कि इस दिन डेज आर फिक्स्ड बट द ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड येट, राइट। क्लास के बीच में ब्रेक होगा क्या? यस यस ऑफ कोर्स, बीच में। हाँ तो उसका शायद वो अभी बैच नाम में वो है, तो हाँ ठीक है। तो थर्सडे को एक और बात कर लेना मैम से, मुझे बता देना पहले, तो मैं फिर उसी हिसाब से रख दूंगा तुम्हारी, है ना। मान लो अगर 5:30 से होती है तो मैं 4 बजे रख दूंगा, 6 से 8 है और फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो 5:30 4 to 5:30 रख देंगे। वो एक ही बैच का मतलब है, जो मंडे और सैटरडे को होगी 6 to 8 एक बैच है, वो थोड़ा जल्दी होती है सर। तो कोशिश करना कि टीटीएस में ना हो, क्योंकि ना फिर तुम मुझसे डाउट कैसे पूछ पाओगे बाद में, है ना। तो कह रहा है कि जिस दिन 2 दिन तो आओगे वैसे वीक में, तो दोनों दिन अगर डाउट पूछ लिए तो टेंशन खत्म, बाकी आराम से मजे से रहो, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी, आई गेस समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा दम नहीं इस चैप्टर में, इट्स वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके जो स्कूल में यूटी वूटी होंगे उसमें यही आएगा। सो आई नीड 1 2 3 more classes to complete this chapter, यानी बाय नेक्स्ट वीक विल कंप्लीट, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आपकी क्लास रिकॉर्डेड है, ये मैं आपको भेज भी दूंगा लिंक।